This We'll cover the conference two will things. now Is be one is recorded. SQL database and another is SQL Server. Two things is available. Now guys, the database, what is the database? So database का मतलब है there are the types of data. First of all, I'm talking about the types of data. And you know there are the two types of data is available. One data is structure format and second is unstructured format. Got in my point? Structure and unstructured. The SQL database store structure format database. And storage account store any kinds of data, yani ki structure or unstructured data. So this is a difference between database and storage. Got it the point, guys? So now I'm using here the database name is called SQL. The SQL database store structured database. What is the terms of the structured database? It's store data in row and column format. The structured data is row and column format. Like I'm create a one table in this storage. And I mention here is a column is called a name and another is age. Like there the multiple user is available here is like I'm talking about like a name is Raj and age is like a 25 and like a name is Ravi and age is called like a 25 and now the one more name is like Aman and like mobile is like a 23232323. So now guys, which entry is enter in our database? दृष्टि कौन सी वाली एंट्री डेटाबेस के अंदर इंटर हो जाएगी? Sir, name Aman Mobile. Which one? दृष्टि Sir, कौन सी last होंगी? वाला थी. लास्ट वाली डेटाबेस के अंदर एंट्री हो जाएगी. Any mobile column is available in a database? No, only name and age column will That be means that this entry there. and this entry. This is a structure. मैंने यहाँ पे structure बनाया the only the name or age. There's a no any mobile column is available. If I'm just create a name and mobile, then this entry is done in a database. But these all entries done in a storage account because the storage supports the unstructured database. यानी किसी भी टाइप्स की एंट्रीज को स्टोरेज में हम स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं. सो दीज आर द अनस्ट्रक्चर्ड के लिए नो एसक्यूएल डेटाबेसेस भी हमारे आते हैं. सो द डेटाबेस ओनली स्टोर अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट डेटा. गॉट इट द पॉइंट? स्ट्रक्चर मतलब कि मैंने एक बिल्डिंग बनानी है, दिस इज अ बेस और इस बेस के अंदर आई एम जस्ट क्रिएट अ 4 पिलर. मैंने 4 पिलर इस पे क्रिएट करे. तो लाइक है कि अब मैंने अगर टेरिस एड ऑन कर दिया इसके ऊपर, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई एम जस्ट एड ऑन अ टेरिस. मैंने इस पे एक टेरिस बना दिया है चारों फ्लोर पे. तो इसके ऊपर अगर मेरे को एक और टेरिस बनानी है तो फिर से मेरे 4 ही पिलर आएंगे ना. यस और नो? Yes, sir. गाइस दृष्टि, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं एक पिलर बीच में लगा दूंगा ऊपर वाले टेरिस पे, तो वो तो गलत हो जाएगा ना. No. इसी तरह अनस्ट्रक्चर बन जाएगा ना, क्योंकि नीचे वाला अलग है ऊपर वाला अलग है.
तो दैट द सेम कंसेप्ट. स्ट्रक्चर का मतलब है द सेम एंट्री. जो टेबल मैंने बनाई है उसी टाइप का डेटा मेरा स्टोर हो सकता है क्लाउड के अंदर, एसक्यूएल के अंदर. So basically developer use this. So now the concept is, first of all I'm create a one, use a reason. This is my reason. In this reason I'm create a one resource group. So this is my resource group. This is my resource group. Inside the resource group I'm create a one SQL database. Sorry, I'm create a first of all in SQL Server, and then I'm create one SQL database. Got it, guys? Just wait. Log in with the portal and I'm go to the resource group. Inside the resource group, I'm create a one resource group. I'm just click on a create and give the resource group name is I'm create a resource group name is SQL hyphen RG resource group. I'm create in East US location and review and create. Now I'm create a one virtual network also. So I'm just create a virtual network. So I'm just click on home and then create a one virtual network and create, because of my server are connected by my network. So create and just give them select a resource group and create a SQL hyphen VNet in East US location. Next I'm using the IP. Is it I'm using IP? Is it like 192.168.1.0/24? And now add subnet. Is it like SQL server? The user IP is 192.168.1.0/26. Now add. I'm create one virtual network and review and create. So now as per the diagram, I'm create one virtual network also. This is a virtual network, or inside the virtual network I'm using IP. Is it 192.168.1.0/24? This is a virtual network. Is the name of this virtual network is SQL-VNet. So this is my VNet. I'm create a one virtual network, or inside the virtual network I'm create a one subnet, and this subnet name is SQL subnet, and I'm give the IP of this SQL subnet is I'm assigned the IP is 192.168.1.0/26. So now I'm allowed this IP address for this particular subnet. Got it the point? So this is my VNet. This is my database. This is my SQL server. So now
I'm create a one resource group with the name of SQL-RG. Second, I'm just create a VNet. So point number one, I'm already create a one resource group. Second, I'm create a one VNet. Now third, I'm create a SQL server. How to create a SQL server is simply I'm just login with portal and search here is SQL server. Now I'm just click on SQL server and then click on a create. And select a resource group. Give the name of SQL server like the ICCP SQL. In East US location, the authentication method is a use SQL authentication या Azure Active Directory. So now I'm using the SQL authentication. SQL server ID and password. So I'm just generate the SQL ID is like ADMIN admin and the password like I'm just give the name is like a MUKES and Mukesh is the username of the SQL server and the password is PASSWORD. Password is password. So PASS pass at 1234 and PASS pass at 1234. So the password is pass at 1234. Now the networking. So now is a networking is a firewall rule. So I'm just give the no. मैं by default I'm just put the no. मैं यहाँ पे कोई firewall rule enable नहीं कर रहा. The next for like enable Microsoft Defender. I'm not enable the Defender. And now just click and review and create. So guys, simply I'm create a one firewall. So I'm not enable any firewall. So एक चीज ध्यान रखना guys, when you create a SQL server, it's not communicate with any network. Either it's not communicate with a virtual network or either it's not communicate with the WAN network. So this is my LAN network जो मैंने SQL VNet बनाया है. This is a provide the communication within a cloud premise. और ना ही WAN. So ये by default जो server है अभी मैंने किसी भी network के लिए allowed नहीं करा है. Got it guys? यानी कि अगर मैं इस सर्वर को एक्सेस भी करने के चाहूंगा तो ये मेरा एक्सेस नहीं होगा क्योंकि इसको एक्सेस करने के लिए वी क्रिएट अ फायरवॉल रूल. Is it Okay. clear, sir? 60 Mukesh. So by default there's a no any communication with SQL server. SQL server के साथ कोई भी communicate नहीं कर सकता. And the always the database connect with SQL server. So आपको अगर database के अंदर कोई data store करना है तो आप via SQL server ही आओगे. You cannot come direct with the database. Okay. तो बिकॉज इट लुक लाइक अ हार्ड डिस्क. तो हार्ड डिस्क आप डायरेक्ट डेटा नहीं डाल सकते. हार्ड डिस्क को आपको पर्टिकुलर किसी लैपटॉप के साथ कनेक्ट ही करना पड़ेगा. यस और नो? Yes. और उसके लिए लॉगिन भी करना पड़ेगा सिस्टम में. या सो द सेम कॉन्सेप्ट कि मेरे को एसक्यूएल सर्वर के साथ डेटाबेस कनेक्ट करना है. सो देयर आर मल्टीपल वे टू क्रिएट अ डेटाबेस. नाउ my the SQL server is running on. After when it's done, then I'm just create a database. So now I'm create a database. I'm just click and then click on SQL database and create a database. Select the resource group is SQL-RG and database name like ICCP-DB. And just give the name of ICCP-DB and select the server. That means you can connect this DB with which SQL server. Maybe you can create a multiple SQL server. Yes or no? But before I'm creating the one SQL server, the value is must. It's not fetch. Just a minute, guys. I'm just refresh and upload the portal. It's not fetching my SQL server. Wait, guys.
Oh guys, I'm just again refreshed. It's a for a fetch. So now my database is not fetching. Here I'm just click on home. Just a minute, guys. If my SQL is ready to use, so first I'm check my SQL server is ready to available. Now I'm refresh it. So if I'm just click on a home and now click on SQL database. Now click on a create. So guys, multiple way you can add a server like I'm flash server. So it's create a new one. So मैं कोई new नहीं create करना चाहता. मैं चाहता हूँ जो मैंने पहले बनाया था वही SQL server मैं select करूँ. So it's not fetching my SQL server. I'm select a SQL resource group first of all, and I'm just click on server name is not fetching, so no problem guys. So there's a multiple way you can adding a server. So I'm not create a SQL, I'm not attach any SQL database for while like at this location. So now there's a multiple way you can just adding a database. So one way is it you can just click on SQL server and then ICCP SQL server, and then you can just click on SQL database. So आप यहाँ से भी SQL database create कर सकते हो. So there is nothing any database attached with this server. तो इस सर्वर के साथ आपका कोई भी डेटाबेस क्या है अटैच्ड नहीं है अभी. Got my point guys? There is no any database. If any database attached with this server, that means it show you. So this is a one way कि आप यहाँ से भी अपना database attach कर सकते हो, but मेरा यहाँ पर database show नहीं हो रहा है. So I'm just click on again database, वो fetch नहीं कर पा रहा है. So anyways, I have another option is available. Don't worry. First of all, I'm just select a source group. Now, so guys, मैं क्या करता हूँ? I'm create a new server from this location. So I'm just give the like a ICCP. This is my database name, and now I'm create a new server with the name of like ICCP SQL1 in East US location. SQL authentication. Give the username is MUKESH Mukesh, and the password is PASS at 1234 and PASS at 1234. And then click OK. Now the next networking, so is in public endpoint and private endpoint. The what is the meaning of public endpoint, private endpoints का मतलब है same. So this is your private endpoint. This VNet is private. And like if somebody access the database in outside of cloud, that means this is a public. Got in my point? So it give you the process you can allow a public access, a private access. So I'm not allowed any public and private access. Got it the point everyone? I'm just give the no access. By default, I'm not provide the any access to my database. Is it clear guys? Mukesh, Srishti, is it clear? Now the next and review and create. Oh, wait. The cost is estimate cost is 27,000. Wait. I'm just go to the preview and just again go to the preview. I'm just change the database plan. So now guys, this is the database plan. तो अभी आप देख रहे थे कितना कॉस्ट मेरा लग जाता because I'm using the pay as you go account. So now I'm using here is a general purpose basic. So basic के अंदर I'm using a space is a 0.5. That means 512 MB मैं ले रहा हूँ. So approximately मेरी जो कॉस्ट है वो 359 on a month आएगी. तो अगर मैं पहले वाला प्लान ले लेता तो मेरा आपको पता है कितना बिल बन के आ जाता अभी. Got it guys? से आपने किया सर ये कॉन्फ़िगर डेटाबेस, राइट? या कॉन्फ़िगर में आपको अपना वो सिलेक्ट करना है कि आप कितना स्पेस लेना चाहते हो, कितनी कौन सा पैकेज आप लेना चाहते हो. नाउ रिव्यू एंड क्रिएट, तो यू कैन सी दैट कॉस्ट इज 359. तो लास्ट टाइम अगर मैं क्लिक कर देता क्रिएट पे तो अप्रोक्सीमेटली मेरा 27-28 हजार रुपए का बिल बन जाता इमीडिएटली. बिल तुरंत जनरेट कर देता क्या? जैसे मैंने लिया अभी ये चार्ज कर लेगा क्या? वो तो एंड ऑफ द मंथ करेगा ना? एक्चुअली मेरा वैसे भी जो है
कि मेरा जो है ना पे एज यू गो अकाउंट है, तो मेरा इमीडिएटली बिल बन जाता है। Got it? Yes. Now guys, you can see कि I'm just create a come to the SQL server। so यहाँ पे दो SQL servers हैं, तो ये मेरा एक पुराना वाला SQL server है। अगर मैं इसको भी एक्सेस करना चाहता हूँ, तो दिस इज अ वे। आई एम जस्ट क्लिक ऑन SQL server, how to access, and this is a Mukesh is a admin, fine, and this is the server name, so this is my server name। I'm just copy this server name and go to the my SQL, जो सॉफ्टवेयर मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करा था। I'm just click on this SQL। इसके अलावा और भी कोई टूल आता है सर ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अलावा? बहुत आते हैं, SQL वर्कबेंच आता है, मल्टीपल टूल्स हैं, बट मोस्टली कैंडिडेट इसी को यूज करते हैं ये ऑन प्रोमाइस के लिए ना। तो गाइस अगर आपको एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे डेटाबेस इंजन एंड विंडोज ऑथेंटिकेशन ना लेके SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। सर्वर नेम, दिस इज अ सर्वर नेम, यूजर नेम इज MUKESH Mukesh, and the password is PASSpass81234, and now click connect। तो गाइस मैं अगर इसको कनेक्ट करता हूँ, so it's give me the error। why error it give me? Because I'm not allowed the server to a specific network। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द बाय डिफॉल्ट मेरा क्या पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों नेटवर्क के लिए ये क्या होता है, डिसेबल्ड होता है। यस और नो गाइस? यस। everyone, is it clear my point? So now I'm delete this one, and now I'm just type the name of ICCP SQL and now delete। so ये मेरा पुराना है। so one more database is available here, is I'm create a one new, so is in I'm just click on SQL database, so just a wait if it deploy। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा डिप्लॉय में चल रहा है second ICCP। तो when it's done, then I'm just explain you the how to। so now it's successfully done। तो guys देखिए अगेन मैं इसको एक्सेस करता हूँ यहाँ पे। I'm just click on home and then click on SQL database। now one database is available in this location, this is ICCP। now click, and why now I'm access this database, that the same server name is available। I'm just copy the server name and then go to the management studio, and I'm just put the server name at this time, this is my server name, and the username is Mukesh and the password is same, and I'm just click on connect and give me the error। so how to resolve this error? so that's the resolve, you can allow, you can create a firewall rule। so in this firewall you can allow the your server IP। so now I'm just click and go to the Google and check my IP। so I'm just type the command my public IP। so what is the my public IP guys? so I'm just click, so guys this is my public IP is 122.160.119.105। I'm just copy this my public IP, got it? This is my public IP, and now I'm just click on a set server firewall rule, and now I'm just rule name is admin, and the start IP of this and end IP of this। so I'm just adding these two IPs and then save। तो गाइज यहाँ पर मैंने क्या करा, जो जिस भी कैंडिडेट को मेरे को अलाउ कराना है, मैंने उसका आईपी एड ऑन कर दिया। लाइक मैं चाहता हूँ कि 60 एक्सेस करे, तो आई एम एड अ 60 आईपी आल्सो इन पब्लिक आईपी। so guys I'm at the public IP of admin, and now if I'm just click here like a connect, so now at this time this server is access, got it? पब्लिक आईपी कर दिया ना, तो उसमें स्पेसिफाई क्यों करना पड़ेगा कि स्टिकर का भी आईपी डालना पड़ेगा इसमें? यार ये पब्लिक आईपी मेरा आईपी है ना, आपका थोड़ी ना है। हर उसका पब्लिक आईपी अलग होता है लोकेशन का। आप तो जो उसको सिस्टम डालना यूज पड़ेगा कर रहे हैं, तभी आपका वो। पब्लिक आईपी अलग होगा। दिस यस। इज नॉट अ पब्लिक आईपी ऑफ SQL, दिस इज अ पब्लिक आईपी ऑफ क्लाइंट, जो क्लाइंट उसको एक्सेस करेगा। ओके। नाउ आई एम क्रिएट अ वन डेटाबेस। तो देखिए मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करा था ICCP के नाम से, शो द डेटाबेस।
Got it the point? Now, you are a developer, so you don't go for on this location. You can create a database. आप यहाँ से भी नया database create कर सकते हो. Now I'm create a one database with a new database with the name of like Srishti. तो मुझे अगर यहाँ से भी database create करना है तो I'm also create a new database for this location. Just a minute when it's open. So now the database name is like MUKESH Mukesh DB. I'm just give the name of database Mukesh DB and then click on OK. So now is it executing? तो देखिए मैंने ये डेटाबेस अपने सिस्टम से बैठ के बनाया ना गाइस. So this database create in Azure database portal. Is it clear guys? How to create SQL database? Yes. बाकी डेवलपर्स का काम है क्या है? हमारा काम है हमें डेटाबेस बनाना है, उन डेटाबेस का एक्सेस प्रोवाइड करा देना है. Now अगर somebody create a table, so अगर आपको कोडिंग आती है, so अब आपको क्या, you can just go to the inside the database और डेटाबेस के अंदर जाके आपको टेबल्स क्रिएट करनी है, like a age name, so you can just create a table like a new and like a create on table. अब टेबल क्रिएट करने के बाद जो भी एंट्रीज करनी है, सो डेटाबेस वाला डेवलपर्स अपना पोर्टल बनाएंगे, लाइक कॉलम नेम इज लाइक NAME नेम and like is it age. So I'm just put a name and then second column is called a मुझे एक्चुअली क्या कोडिंग आती नहीं है, डेटाबेस पे काम करना, डेटाबेस बनाना आता है बट डेटाबेस पे काम करना नहीं आता गाइस. So anyways, I'm just go to here and click on home and then click on SQL database, so you can see that the one more database is created with the name of Mukesh. अभी यहाँ पे एक और डेटाबेस आपको दिखाई देने लग जाएगा मुकेश नेम से. Now guys देखिए, there the one database is ready to use. एक और डेटाबेस बन के आ गया. This is ICCP, this is a Mukesh. Yes. Now you can see in a portal, यहाँ पे भी आपको मुकेश डेटाबेस दिखने लग जाएगा स्टार्ट. अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर एप्लीकेट हो जाएगा गाइस. Just a minute, wait and watch. And one more thing कि like कि अगर आपको guys, तो यहाँ पे अगर आपको अपना प्राइवेट नेटवर्क अलाउ कराना है, like when you allow the private network, so just you can create a set a server firewall and server firewall में जाके can click add a existing virtual network. So हमने भी एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया हुआ, हो सकता है कि मेरे क्लाउड के सर्वर्स भी तो मैं कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ इस डेटाबेस से. Yes or no? Okay. Add a virtual network and select a virtual network. So आप यहाँ पे अपना virtual network SQL VNet के नाम से हमने virtual network बनाया and give the name is like SQL VNet 1 and now enable. तो guys in this location मैंने क्या करा, मैंने अपना VNet भी add on कर दिया, यानी कि अब मेरे अगर क्लाउड का भी कोई सर्वर है and it's connected with this particular network rule, so like क्या हो गया, new VNet rule 1 subscription, select SQL VNet. Now okay.
So यहाँ पे I'm just adding a virtual network. Now I'm create a one database for this location. Like a create a name and age. This is a table, and now save this table. Is with the name is like India, and now save. तो गाइस मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करी है. अब टेबल के अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, इंटर कर सकते हो. सो आई एम जस्ट क्रिएट वन टेबल. जो भी वैल्यूज आपको यहाँ पे डालनी है, नेम इज लाइक राज एंड इज एज इज लुक लाइक, तो जो भी हम वैल्यूज यहाँ पे डालना चाहते हैं वो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं. तो दीज आर द वर्क एज डेटा डेवलपर्स. एंड नाउ आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल. Now I'm allowed a VNet also. That means this VNets are communicate with my database. So मैंने एक बता दिया कि आउटसाइड से मेरा पर्टिकुलर ये यूजर कम्युनिकेट करेगा, और इंटरनल में मैंने बता दिया कि ये सब नेटवर्क. देखिए द मुकेश डेटाबेस इज कम ऑटोमेटिकली. गॉट इट द पॉइंट मुकेश? Yeah. Now I'm delete this one, and also I'm just delete this one also. So is it clear, Srishti, how to create SQL server, how to create a database, and how to connect database with the SQL? Is it clear, Srishti? Yes. Now I'm delete in both databases in this location. So now if I'm Yes. just refresh this portal, It It will not be showing anymore. what happened? Screen is not visible. Is it visible, Mukesh, Srishti? So this is a way how to create a database, how to attach database. And now आगे का काम developers का है guys, कि developers किस तरीके से उस चीज को handle करते हैं. तो for हमारा काम इतना ही है, बाकी developers हैं अपना काम वो अपने तरीके से करेंगे. So this is my SQL server, and now I'm delete this SQL server. तो guys पेडेबल सर्विसेज हैं, तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखना. क्लियर Okay. मुकेश? गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. So enough for today. Yeah, start new one. Stay. No, that's enough. So Yes, sir. thank you guys. So